So let's continue uh, with further part. So next is that which we were seeing is regarding that कि जो भी अभी तक हमने देखा कि आगे ये जो एक्टिविटी है ये तो आप मतलब जब लैब में आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे आपके साइंस टीचर के गाइडेंस में सो यू विल एबल टू सी एंड ऑब्जर्व दैट व्हाट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट इज obtained ड्यूरिंग दिस such type of the experiment. So, repeat the same procedure using other chemicals from the above list, and we have to repeat this procedure again and again by using the other different chemicals from the list above. So, in the above activity, ethanol is a saturated carbon compound. और इथेनॉल जो है एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है. सो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या है यहाँ पर? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हमने ऊपर देखा था. सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स जिनके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है. सो इथेनॉल उसी इस कैटेगरी में से एक है. सो इथेनॉल इज अ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वेल नैप्थेलिन इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड. और नैप्थेलिन जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसकी वजह से नैप्थेलिन के स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे सो कार्बन कार्बन के इसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं. जनरली सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बर्न विद अ क्लीन ब्लू फ्लेम. सो अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं सो वो क्लीन ब्लू फ्लेम से बर्न होते हैं और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो येलो फ्लेम और फिर ब्लैक स्मोक रिलीज करते हैं. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आप कहिए या फिर आप कोई अलग और क्वेश्चंस जैसे कि कंप्लीट द फॉलोइंग करके जो क्वेश्चन सेक्शन होता है सो उसमें भी डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है. So it is this black smoke due to which a deposit of the black soot got collected on the metal plate. और इसी की वजह से जो ब्लैक स्मोक जो रिलीज होता है उसी की वजह से एक ब्लैक सूट. Comparison of molecular formula indicates that the proportion of the carbon is larger in unsaturated compounds than in saturated compounds. So, रिसर्च और स्टडी से ये पता चला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो बताता है कि कार्बन का प्रोपोर्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड विद द सैचुरेटेड कंपाउंड्स. सो अगर वीडियो में लैग रहा सो आप लाइव चैट में बताइए. सो एज बेसिकली मैं तो मतलब मेरा ज़्यादा मतलब फोकस लर्न टीचिंग पे है. सो अगर वीडियो में लैग वगैरह कुछ आता है सो आप लाइव चैट में बताइए. So as a result some unburnt carbon particles are also formed during the combustion of unsaturated compounds while in the flame these hot carbon particles emits the yellow light and therefore the flame appears yellow. However, if oxygen supply is limited, a yellow flame is obtained by combustion of saturated compounds as well. So, अगर मतलब ऑक्सीजन सप्लाई अगर लिमिटेड है, so yellow flame is obtained by combustion of the saturated compounds as well. So yellow flame हम obtain कर सकते हैं saturated compounds से भी, लेकिन सप्लाई अगर ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो अगर कम रहा तो. सो आगे जो है रिएक्शन उसके अलग अलग हमने कंबशन रिएक्शंस के अलग अलग जो भी टाइप्स वगैरह है सो रिएक्शंस भी देखी और कंबशन के इसमें अलग अलग जो कलर्स फ्लेम्स के हम देख सकते हैं दैट इज द येलो कलर एंड द ब्लू फ्लेम. येलो एंड ब्लू फ्लेम जो कि हम देख सकते हैं दैट वी हैव सीन. नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन. So you have seen that carbon compounds start burning by combining easily with the oxygen in the air when ignited in the air. In this process of combustion, all the chemical bonds in the molecule
of the carbon compound break and CO2 and H2O are formed as the product. In other words, the carbon compounds is completely oxidized during the combustion. Chemical compounds can also be used as a source of the oxygen. Substances that can give the oxygen to the other substances are called as oxidants or oxidizing agents. Potassium permanganate or potassium dichromate are commonly used as the oxidizing agent. An oxidizing agent affects on certain functional groups in the present carbon compounds. सो यहाँ पर जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यहाँ की जो भी कार्बन कंपाउंड्स अगर हम उसको बर्न करते हैं सो वो जल्दी से इग्नाइट होके ऑक्सीजन के साथ जो कि एयर में प्रेजेंट है सो उसके साथ जल्दी से रिएक्ट होते हैं और CO2 H2O गैस एज द प्रोडक्ट H2O एज द प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो अलग इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें सो कार्बन कंपाउंड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द कंबस्शन सो केमिकल कंपाउंड्स आल्सो यूज्ड एज द सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन सो इसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं सो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है सो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट आर कॉमनली यूज्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट में आस्क्ड इन द एमसीक्यू कैटेगरी और आल्सो इन द कंप्लीट द फॉलोइंग के पार्ट में भी ये पूछा जा सकता है कि पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट ये दो जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है So an oxidizing agent affects on certain functional groups in the present carbon compounds. So oxidizing agent जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को जो कि कार्बन कंपाउंड्स में प्रेजेंट रहते हैं नेक्स्ट यहाँ पर ऑलवेज रिमेम्बर करके एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया है सो दैट आल्सो वी आर गोइंग टू सी कि ऑलवेज रिमेम्बर में यहाँ पर क्या कहा गया है There are inlets for air in the gas or the kerosene stove at home. It is because of these air inlets that the gaseous fuel is mixed with sufficient oxygen and a clean blue flame is obtained. In case there is a deposition of the black soot on the bottom of the cooking vessels, it is an indication of the choking of the air inlets and thereby the wastage of the fuel. In such case, the air inlets of the stove should be got cleaned. सो जो कि स्टोव जो यूज किए जाते थे अभी मोस्टली ये दिखाई नहीं देते लेकिन पहले के जमाने में जब स्टोव जो यूज किए जाते हैं सो उसमें एक इनलेट रहता था एयर के लिए सो वहां से ऑक्सीजन जो है वो पास हो सके और जिसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन मिलने की वजह से ब्लू फ्लेम से वो बर्न होता था सो लेकिन जो कि आफ्टर द बर्निंग ऑफ दैट ब्लू फ्लेम सो एक ब्लैक सूट जो कि वेसल के यहाँ बॉटम में एक सेटल डाउन हो जाता था दैट इज इंडिकेशन दैट की एयर जो है वो चोक हो चुकी है दैट इज द वेस्टेज ऑफ द फ्यूल सो अगेन यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है सो एक्टिविटीज यू विल परफॉर्म सो इन द अबव एक्टिविटी इथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कलाइन पोटेशियम permanganate to form the ethanoic acid. Only certain bonds in the vicinity of the functional group take part in this reaction. The following equation will explain. So जो कि हमने यहाँ पर इथेनॉल लिया है दैट इज CH3CH2OH जो कि इथेनॉल है इथेनॉल की रिएक्शन यहाँ पर की गई है कि ऑक्सीडाइज कर रहे हैं एज अल्कलाइन KMnO4 विच इज द पोटेशियम मैंगनेट so potassium permanganate is used here as KMnO4 which is acts as the oxidizing agent and oxidizes and leads to the formation of the ethanoic acid that is CH3COOH so आप इसका भी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था सो इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं कि ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे रिएक्शन में ड्यू टू विच आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इथेनोइक एसिड एज द प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है So on adding the pink colored solution of the potassium permanganate to the ethanol, the pink color disappears in the beginning. This is because potassium permanganate is used up in this oxidation reaction. At a certain point of the addition, oxidation of all the quantity of the ethanol in the test tube is complete. If the addition of the potassium permanganate is continued beyond this point, it is not used up and become the excess. The pink color of this excess potassium permanganate does not vanish but stays as it is. सो जो पिंक कलर सॉल्यूशन जो कि पोटेशियम परमैंगनेट का होता है वो इथेनॉल में ऐड किया जाता है एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द इथेनोइक एसिड सो पोटेशियम परमैंगनेट जो कि यूज किया जाता है दैट ब्रॉड्स ब्रिंग्स हियर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन
एंड एट अ सर्टेन पॉइंट अगर हम एडिशन ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल द क्वांटिटी अगर बियॉन्ड द लिमिट हो जाती है, सो वो पोटेशियम पर मैग्नेट यूज नहीं होता और वो एक्सेस हो जाने की वजह से वो वैनिश नहीं होता। सो सबसे पहले यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है कि हमें इथेनॉल लेना है। सो इथेनॉल में जब हम पोटेशियम परमैंगनेट जब डालेंगे, सो पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद तुरंत जो है इथेनॉल का जो कलर है वो वैनिश हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम और ऐड करते चले जाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट को इथेनॉल के सॉल्यूशन में, सो अब ऐसा आएगा कि मतलब जो कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का यानी कि पिंक, so yeah, basically that leads to the formation of the ethanoic acid as the properties of the chemical properties gets changed from the alcohol to the oic acid. So this is the oxidation reaction which we have seen. So हमने दो reaction देख ली, एक थी combustion reaction और एक थी oxidation reaction. So next जो कि हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर addition reaction. So next हम देखेंगे यहाँ पर reaction जो कि है addition reaction. So यहाँ पर again एक experiment दिया है that we will be performing. In the above activity, the observation of disappearing, diminishing color of the bromine iodine indicates that the bromine iodine is used. This means that the bromine iodine has undergone a reaction with concerned substance. This reaction is an addition reaction. So when a carbon compound combines with another compound to form a product that contains all the atoms in both the reactants, it is called as an addition reaction. So जब carbon compound एक और compound के साथ combine होके कि जो एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, such type of the reactions are called as the addition reactions. So unsaturated compounds contains a multiple bond as their functional group. They undergo the addition reaction to form a saturated compound as the product. The addition reaction of an unsaturated compound with the iodine or bromine takes place instantaneously at room temperature. Moreover, the color change can be felt by eyes. Therefore, this reaction is used as a test for the detection of a multiple bond in a carbon compound. So अगर compound में multiple bonds present है या नहीं, सो उसके लिए ये जो डिफरेंट रिएक्शंस है परफॉर्म की जाती है, दैट इज एडिशन ऑफ द आयोडीन, ब्रोमीन एंड ऑल. सो उसकी वजह से जो कलर चेंज जो होता है, सडन कलर चेंज, सो दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड इट कैन बी आइडेंटिफाइड दैट वेदर द कंपाउंड कंटेन्स द मल्टीपल बॉन्ड और द सिंगल बॉन्ड. In the above activity, the color of the iodine bromine disappears in the reaction between an oil and the iodine. However, there is no change with the Vanaspati ghee. What inference will you draw from this? Which of the substances do not contain a multiple bond? So that after performing all this activity in your lab experiment under the guidance of your science teacher, so you will able to identify whether which compounds contains the double bond or triple bond and a single bond. So different यहाँ पर जो फैटी एसिड्स है, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, palmitic acid, linoleic acid, so that different which you can be used, और आयोडीन उसमें ऐड करने के बाद कि क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, that you can identify it as there is the color change occurs. So the unsaturated compound can also undergo addition reaction with the hydrogen to form a saturated compound. However, it is necessary to use a catalyst like the platinum or nickel for this reaction. We have already seen the catalyst in the substance that due to the presence of which rate of the reaction changes without causing any disturbance to it. और जो कैटलिस्ट होता है, सो वो एक्चुअली रिएक्शन में कोई चेंज नहीं करता, लेकिन वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है. दैट इज द कैटली यूज ऑफ द कैटलिस्ट इन द रिएक्शन. That is actually the use of the catalyst which is used in the reaction. So
दैट इज यही कि जो कैटलिस्ट हमने देखा था ये रिएक्शन में कि प्लेटिनम निकेल जो यूज किए जाते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल टू द वनस्पति घी, there we have used the catalyst as the named as the nickel and platinum. सो निकेल और प्लेटिनम यहाँ पर भी यूज किए जा रहे हैं। सी सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज देयर H2 by P in the presence of the nickel that leads to the carbon carbon single bond. This is a reaction is used for the hydrogenation of the vegetable oils in the presence of the nickel catalyst. You have seen in the above activity that iodine test indicates the presence of the multiple bond. So हमने ऊपर देखा कि iodine की टेस्ट की जाती है. So to identify that whether the compound is present with the multiple bonds, that is double bond in the particular. In the molecules of the oil, while vanaspati ghee is found to be saturated, molecules of the vegetable oil contain long and unsaturated carbon chains. Hydrogenation transforms them into the saturated chains and thereby vanaspati ghee is formed. So, as there is the formation of the vanaspati ghee from the vegetable oil, which we have seen. The molecules of the vegetable oil contain long and unsaturated carbon chains. Hydrogenation transforms them into the saturated chains and thereby vanaspati ghee is formed. Unsaturated fats containing double bonds are healthy while saturated fats are harmful to the health. So, जो कि unsaturated fats में होते हैं double bonds are healthy एंड वाइल द सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए. सो दिस वी हैव सीन दैट इज द रिएक्शन विच इज एडिशन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. So, as the single bonds carbon hydrogen and carbon carbon are very strong, the saturated hydrocarbons are not reactive and therefore they remain inert in the presence of most reagents. However, saturated hydrocarbons in the presence of sunlight react rapidly with the chlorine. In this reaction, chlorine atom replaces one by one all the hydrogen atoms in the saturated hydrocarbon. The reaction in which the place of one type of the atom group in a reactant is taken by another group of the atoms is called as a substitution reaction. Chlorination of the methane is a substitution reaction which gives four products CH4 plus Cl2. So मीथेन हम ले रहे हैं और उसकी रिएक्शन क्लोरीन एटम से क्लोरीन के साथ कर रहे हैं. सो CH4 plus Cl2 और प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के साथ. सो CH3Cl that is methyl chloride is formed along with the HCl that is hydrochloric acid. अगेन जो CH3Cl मिला सो उसके अगेन रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो हमें मिलेगा CH2Cl2 प्लस HCl. अगेन CH2Cl2 की रिएक्शन क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CHCl3 प्लस HCl. अगेन CHCl3 की रिएक्शन Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट we get CCl4 that is carbon tetrachloride plus HCl. So still large number of the products are formed in the chlorination reaction of higher homologues of the alkanes. So ethane लिया था और उसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ हम करते चले गए. So until all the hydrogens gets replaced with the chlorine atoms and we get last as the carbon tetrachloride that is CCl4 as the product finally. And जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर large number of the products जो है वो formed हुए. So you have learnt about four types of the common reactions in the previous chapter, in which of these four types, the addition and the substitution reaction of the carbon compounds can be included. What are the additional details and difference in the addition and substitution reaction? So आगे जो है important carbon compound ethanol and ethanoic acid. So ethanol and ethanoic acid are the two of the commercially important carbon compounds. Let us now learn more about them. So at the room temperature, colorless ethanol is a liquid. So रूम टेम्परेचर पे जो कलरलेस इथेनॉल होता है यानी इथेनॉल को कुछ कलर ही नहीं होता एट द रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड और वो जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेल्सियस और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज द 78 डिग्री सेल्सियस.
जनरली इथेनॉल को अल्कोहल और स्पिरिट भी कहा जाता है। सो इथेनॉल इज कॉल्ड एज द अल्कोहल और स्पिरिट। सो मेनी ऑफ द टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इथेनॉल इज जनरली आल्सो नोन एज, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज द अल्कोहल और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द स्पिरिट। सो इथेनॉल इज सोल्यूबल इन वाटर, और जो इथेनॉल होता है दैट इज सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल द proportions. So when aqueous solution of the ethanol is tested with the litmus paper, it is found to be neutral. So aqueous solution जब हम लेते हैं और लिटमस पेपर पे जब हम उसकी टेस्ट करते हैं, सो हमें न्यूट्रल मिलता है। न्यूट्रल दैट इज द 7। So, consumption of the small quantity of the dilute ethanol shows its effect even though is condemned. Still, it has a remained socially widespread practice. Consumption of the alcohol harms health in a number of ways. It adversely affects the psychological processes and the central nervous system. So, जो अल्कोहल का कंजम्पशन है, अल्कोहल का कंजम्पशन यानी कि इथेनॉल का कंजम्पशन, वो हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। और जो ये जो है, ये कि हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है, उसको भी अफेक्ट करता है और नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। So it adversely affects the psychological processes and the central nervous system. So consumption of even a small quantity of the pure ethanol called absolute ethyl alcohol can be lethal. So जो कि स्मॉल क्वांटिटी में अगर हम ले प्योर इथेनॉल यानी कि C2H5OH जो कि अल्कोहल है, सो वो भी जो जिसे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कह सकते हैं, सो वो भी हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए। So ethanol being good solvent, it is used in the medicine such as the tincture iodine, solution of the iodine and ethanol. So ethanol एक good solvent होने की वजह से उसे हम यूज करते हैं with iodine as in the tincture of iodine. So जो कि हम आयोडीन की बॉटल जो कि हमें मेडिकल पर मिलती है जनरली, सो उसमें आयोडीन प्लस इथेनॉल मिक्स होते हैं। सो कफ मिक्सचर एंड ऑल्सो इन द मेनी टॉनिक्स, सो कफ मिक्सचर मिक्सचर में भी इथेनॉल यूज किया जाता है लेकिन बहुत कम प्रोपोर्शन में। एंड जो टॉनिक्स की बॉटल्स वगैरह होती है, उसमें भी मेडिकल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। स्टिल अगर अब तक आपके कुछ डाउट्स वगैरह होंगे, आप लाइव चैट में पूछ सकते हैं। There is a network lag in the video. Hello, hi. Hi, Venu. Venuya, hello, hi. स्टिल अगर अभी तक जो पढ़ा है उसमें अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे, आप डेफिनेटली लाइव चैट में यहाँ पर पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो करके यहाँ पर एक सेक्शन हमें यहाँ पर दिया गया है, वो देखते हैं। मिथेनॉल CH3OH, the lower homologue of the ethanol, is poisonous, and intake of its small quantity can and times at times and can be lethal. To prevent the misuse of the important commercial solvent ethanol, to prevent
The misuse of the important commercial solvent ethanol, it is mixed with the poisonous methanol. Such ethanol is called as a denatured spirit. So many of the times denatured spirit क्या है इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है. So denatured spirit क्या होता है? That is a combination of the methanol plus ethanol. So a blue dye is also added to it so that it is easily recognized. सो जो मिथेनॉल होता है जो कि लोअर होमोलॉग है इथेनॉल का, दैट इज द टू पॉइजनस. अगर स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर मिथेनॉल का कंजम्पशन अगर कोई करता है, सो दैट अफेक्ट्स द विजन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो we will stop here. So next we will continue with the chemical properties of the ethanol, जो कि अलग अलग रिएक्शन है इथेनॉल की एंड इथेनोइक एसिड के, वो हम आगे के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. So still now, if you are having any kind of the doubt regarding, so you can ask in the live chat or else you can comment. And if you like the content which is provided here, so do like to this video, do subscribe to this channel and also share with your friends. And also press the bell icon notification so you get updated as when the live is